बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी डेवलपमेंट के इस कोर्स में आज एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल मैपिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सोशल मैपिंग। सोशल मैपिंग हम कहते किसे हैं? Social mapping is a visual method of showing the relative location of household and the distribution of different people. For example, male, female, adult, child, landless people, literate or illiterate people in the community, living together with the social structure, group, organization of an area. कि वो ये तमाम लोग जो हैं वो एक एरिया में रहते हैं, ये उनकी मैपिंग करना है. This option is used to help identify household using predetermined indicators that are based on socio-economic factors. It works to determine a relative ranking of socio-economic status of the household rather than the absolute ranking. It can help determine which households are benefiting from an assessment and whether or not they belong to the target group. The population well-being is then ranked by those living there according to which household is better or worse off in terms of selected indicators. जहाँ पे हम well-being को भी मैप करते हैं, उसका भी पता चलाते हैं कि जो इंडिकेटर्स पहले से जो हम डिटर्मिन किए गए हैं उनकी बेस के ऊपर कौन से जो फैमिलीज हैं उनकी वेलबींग बेहतर है और किन फैमिलीज की वेलबींग बेहतर नहीं है. This option therefore result in information about household relative well-being rather than the absolute assessment. सोशल मैपिंग इज़ यूजफुल फॉर, किस लिए ज़रूरी है सोशल मैपिंग करनी? एक कम्युनिटी वर्कर के, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टूडेंट के आपको सोशल मैपिंग करनी आनी चाहिए. और इसलिए क्यों ज़रूरी है? टू एक्सप्लोरिंग कम्युनिटी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसेस, आइडेंटिफाई हु लिव्स वेयर इन द कम्युनिटी. ये भी पता चलता है कि माशरे के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर कौन कहाँ रह रहा है, कौन सा एरिया को हम अपर क्लास एरिया कहते हैं, कौन सा लोअर क्लास एरिया है, उन हाउस होल्ड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है. आइडेंटिफाई डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यूजिंग locally defined criteria and discussing social inequalities. Identify the location of different social groups in relation to key resources. Key resources के relationship के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा social group कहाँ रह रहा है, including biodiversity and ecosystem services and the community structure and processes that may be relevant in influencing the distribution of benefits. Identifying which community member may be most vulnerable to various hazard and risk. ये भी पता चलता है कि कौन से ऐसे लोग हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन से माशरे के लोग मोस्ट वल्नरेबल हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कर्फ्यू लग जाता है तो माशरे के कौन से ऐसे लोग हैं जिनको, जो डे टू डे अर्न करते हैं, जिनके लिए जो लिविंग है वो मुतासिर होगी, इंक्लूडिंग दोज रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड डिस्कसिंग कोपिंग स्ट्रैटेजीज एंड अपॉर्चुनिटीज. कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसकी वजह से मुल्क बंद हो जाता है या माशरा बंद हो जाता है या कम्युनिटी को बंद करना पड़ता है, तो ऐसे कौन से वल्नरेबल ग्रुप है जिनको डे टू डे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होगी. आइडेंटिफाई द लोकेशन, एक्सेस एंड यूज द की रिसोर्सेज including biodiversity and ecosystem service in relation to different social groups to inform ecosystem services valuation and equitable benefit sharing mechanism. तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इस चीज़ को जानने की कोशिश की है कि सोशल मैपिंग क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और सोशल मैपिंग करना क्यों ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच.